सुशासन दिन को मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के बख्शीपंच मोर्चा की ओर से कारेलीबाग मेंटल अस्पताल में मरीजों में फलों का वितरण करवाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर आज सुशासन दिन मनाया जा रहा है, तब उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के बख्शीपंच मोर्चा की ओर से मेंटल अस्पताल पर मरीजों में फलों का वितरण करवाया गया था, जिस दौरान सांसद रंजनबेन भट्ट, वडोदरा के मेयर पिंकीबेन सोनी, नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चेयरमैन मिनेश पंड्या और साथ ही स्थानीय नगर सेवक और बख्शीपंच मोर्चा से जुड़े हुए अग्रणी मौजूद रहे थे। आज रोज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न एवं साध्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी नो 99मो जन्मदिवस है। आ जन्मदिवस ने एटले आज रोज सुशासन दिवस तरीके भारतनी अंदर उजववामां आवे छे। भारतीय जनता पार्टी बख्शीपंच मोर्चो वडोदरा महानगर तरफथी दर वर्षे आ दिवसे होस्पिटलनी अंदर अलग अलग जग्याए बाळकोने, धात्री माताओने, विकलांगोने, दिव्यांगोने अने मनोरोगीओने फ्रूट वितरण करी अने तेओनुं स्वास्थ्य सारूं रहे ए प्रमाणे प्रयत्न करवामां आवता होय छे। ओबीसी मोर्चो हमेशा माटे गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, कचड़ेला अने छेवाड़ाना मानवीओने साथ अने सहकार आपवा माटे सर्जायेली छे। अमे बख्शीपंच मोर्चो छेवाड़ाना मानवी सुधी सरकारनी तमाम योजनाओ लईने पहोंचे छे अने घर घर सुधी दरेकने आने लाभो अपावीए छे। आजे आ वस्तु एटला माटे तमने कही रह्यो छुं कि अटल बिहारी वाजपेयीजीनो अंत्योदयनी योजना के जे वीर सावरकरजीए आपी हती ए फळीभूत करवाने ध्यानमां राखीने अमे पोते पण आज मनोरोगीओ पासे आवी अने आ कार्यक्रम कर्यो छे अने अटल बिहारी वाजपेयीजीने अकल्पनीय एवं आ मनोरोगीए आज खरेखर एमने सत्सद नमन कर्या छे अने हूँ पण मारा दिलथी हार्दिक कोटी कोटी नमन करूँ छूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत रत्न અને દેશના વડાપ્રધાન શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયીજીના આજે જન્મ જયંતિ નિમિત્તે વડોદરા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી બખ્શીપંચ મોરચા દ્વારા આજે વડોદરામાં આવેલી મેન્ટલ હોસ્પિટલ અને એમાં રહેતા કંઈ ને કંઈ કારણોસર પોતાના મગજની સમતુલા ગુમાવનાર દર્દી એમને ફ્રૂટ વિતરણ કરવાનો આજનો આ ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। ખૂબ એક થાય કે પોતે મેન્ટલી અસ્વસ્થ છે છતાંય પોતે સરસ મજાનું ગીત પણ ગાઈ શકે છે, યોગનું શ્લોક પણ બોલી શકે છે। તો એવું ચોક્કસ આપણે કહી શકીએ કે મેન્ટલ હોસ્પિટલનો જે સ્ટાફ છે, ડૉક્ટર્સ છે, એ પણ આ લોકોને બાળકોની જેમ સાચવતા હોય છે અને ત્યારે જ આ દર્દીઓ આટલા સારા સ્વસ્થ થતા હોય છે। આજના દિવસે અટલજીને પણ નમન વંદન અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની મારી ટીમ, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ સંગઠનની ટીમ, અમારા શહેરના મહામંત્રી રાકેશભાઈ, સત્યનભાઈ, બખ્શીપંચ મોરચાના શહેરના અધ્યક્ષ ભરતભાઈ અને આખી ટીમ દ્વારા જે આખો દિવસ સેવાકીય કાર્યની આજે એ લોકોએ સેવા કરી છે, સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। ધન્યવાદ।